नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल और बुला। आप सबको स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फिजियन फोकस। मैं हूँ आपके होस्ट जोशी रेड्डी। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटोरीज ऑफ स्क्वामिश, कैट्सी, सिल्वरटूथ एंड मॉस्क्वियम नेशंस। Halloween is just around the corner. It falls on October the 31st. अगर आपके बच्चे trick or treat करने के लिए जा रहे हैं, तो आप as parents should always check what's inside the treat bags. Please check any open packages or candies or anything that is being tampered with. आप नहीं चाहते हैं कि आपके बच्चे sick हो जाए. Also, dress them up with outfits that is visible, जिससे motorists देख सके. Happy Halloween from our TV family to yours. हम आप सभी की शुक्रिया अदा करते हैं, those of you who are able to come and celebrate Fiji's 53rd Independence Day at Bollywood Banquet Hall with us last week, and also those that donated to Guru Nanak Diversity Village, long-term care home for seniors. You can still make a donation to PICS, and we can pick up the donation check from you and get your income tax receipt from PICS. Happy Navratram to you all from us. Navratram starts on October the 15th and ends on October the 24th. Diwali is on November the 12th. Let's take a short break, and we'll be back after a few words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. United Pallets and Crates is located at 11585 134th Street in Surrey, BC. Give Sam Dooler a call At 604-760-2028. or call the office number at 604-634-2001. You can also visit the website, which is www.unitedpalletsandcrates.com, or send us email at info@palletsandcrates.com. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते बार की फिजी न्यूज़ को लेकर आते हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजियन फोकस में आपका स्वागत है। यह कार्यक्रम वैंकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। फिजी पुलिस फोर्स और न्यूजीलैंड पुलिस के बीच एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के परिणाम स्वरूप एक लोकल बिजनेसमैन उमरजी एयाज मोहम्मद मूसा को सफलतापूर्वक दोषी ठहराया गया है और उसे सज़ा सुना दी गई है। पुलिस चीफ ऑफ इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशंस एसीपी सकियो रेकादी ने पुष्टि की है कि उमरजी पूरे पैसिफिक क्षेत्र में इलिसिट ड्रग्स के आयात और निर्यात करने वाले सिंडिकेट के पीछे का मास्टरमाइंड था और उसके 4 अन्य सहयोगी के साथ अब सभी को दोषी ठहराया गया है और सज़ा सुना दी गई है। अमरजी 2017 में न्यूजीलैंड में 3 अलग अलग नशीली दवाओं के आयात में अपनी इन्वॉल्वमेंट के कारण सज़ा के लिए बुधवार 9 अगस्त 2023 को ओकलैंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेश हुए। उमरजी को 4 साल की सज़ा सुनाई गई है और वह न्यूजीलैंड में कारावास की सज़ा काटेंगे। पुलिस ने पिछले साल पुष्टि की है कि फिजी में एक बड़े गोदाम और फार्मास्यूटिकल चेन के मालिक उमरजी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया था। उमरजी पर इलिसिट ड्रग्स के निर्माण के संबंध के आरोप लगाए गए हैं। फिजी के नॉर्दर्न डिवीजन में बड़ी संख्या में किसानों ने कसेरा और डालो जैसी पारंपरिक जड़ वाली फसलों के बजाय मैरिजुआना की खेती की ओर रुख लिया है। फिजी एग्रो मार्केटिंग रीजनल मैनेजर नॉर्थ रातू नेमिया लेवे ने सबसावू में हाल ही में मेडिसिनल कैनबिस कंसल्टेशन के दौरान इस प्रवृत्ति पर ध्यान आकर्षित किया है। उन्होंने बताया है कि कई किसानों ने मैरिजुआना उगाना चुना है क्योंकि यह जल्द पक जाता है और कानून द्वारा प्रतिबंधित होने के बावजूद इसका बाजार
सुधार जो है आसानी से उपलब्ध है। लेवे ने चिंता व्यक्त की है कि बदलाव देश में जड़ फसलों की शॉर्टेज को प्रभावित कर सकता है। लेवे ने इच्छुक व्यक्तियों और किसानों के बीच संदेह को दूर करने के लिए बस्तियों और गांव में या गांव के बीच जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। नॉर्दर्न डिवीजन में मेडिसिनल कैनबिस परामर्श के बाद अधिकांश उपस्थित लोगों ने फिजी में मेडिसिनल कैनबिस उद्योग की स्थापना के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने इस क्षेत्र में संभावित सामाजिक और आर्थिक लाभों का भी हवाला दिया है। फिजी मेट्रोलॉजिकल सर्विस ने शुक्रवार रात सोलोमन आइलैंड्स के ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में एक ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस का पता लगाया है। इस डिस्टर्बेंस को TD01F नाम दिया गया है। विशेष रूप से TD01F साइक्लोन सीजन के बाहर विकसित हुआ है और 2023 और 2024 ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन के दौरान उभरने वाली ये पहला प्रणाली है। इस प्रणाली के अगले सप्ताह की शुरुआत में एक ट्रॉपिकल साइक्लोन में विकसित होने का संभावना है। हालांकि इस समय यह फिजी समूह के लिए सीधा खतरा पैदा नहीं करता है। फिजी मेट्रोलॉजिकल सर्विस अगले कुछ दिनों में TD01F के विकास पर निगरानी रखना जारी रखेगी और किसी भी नए विकास पर जनता को तुरंत अपडेट किया जाएगा। 1 नवंबर से शुरू होने वाले ट्रॉपिकल साइक्लोन सीजन के मौसम के साथ नेंदीवेडा स्टेशन जनता के सदस्यों को नवीनतम चेतावनी के साथ अपडेट रहने का दृढ़ता से सलाह दे रहा है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। ईस्ट वैंकूवर में 2 लोगों को गोली मारे जाने के 1 महीने से अधिक समय बाद पुलिस का कहना है कि एक पीड़ित की मौत हो गई है और एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। VPD का कहना है कि अधिकारियों को 10 सितंबर को आधी रात के बाद विक्टोरिया ड्राइव और ईस्ट 28 एवेन्यू के क्षेत्र में 2 लोगों को घायल देखने के बाद में बुलाया गया। पुलिस ने बताया है कि उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़िता में से एक की हालत में सुधार हो रहा है जबकि दूसरे ज़ुहरुद्दीन मंसूरी को पिछले सोमवार को चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। VPD का कहना है कि एक संदिग्ध को 18 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप तय नहीं किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक ज़ुहरुद्दीन मंसूरी की मौत इस साल की 13th हत्या है। जांचकर्ता जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को 604-717-2500 पर होमिसाइड यूनिट का संपर्क करने के लिए कह रहे हैं। वैंकूवर वासी जल्द ही दूध के साथ साथ वाइन लेने के लिए ग्रोसरी स्टोर पर जा सकेंगे क्योंकि सिटी काउंसिल ने गुरुवार रात एक बायलॉ में बदलाव की मंजूरी दे दी है जिसके तहत कुछ दुकानों में शराब बेचा जाएगा। सिटी का कहना है कि 10,000 स्क्वायर फीट से बड़े ग्रोसरी स्टोर जिनके पास प्रोविंशियल वाइन स्टोर लाइसेंस है और सिटी बिजनेस लाइसेंस दोनों है शेल्फ पर शराब बेच सकते हैं बशर्ते वे सभी प्रोविंशियल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करें। शहर का कहना है कि शराब की बिक्री करने वाले सभी कर्मचारियों की उम्र कम से कम 19 वर्ष होनी चाहिए और उनके पास वैलिड सर्विंग सर्टिफिकेट होना चाहिए जबकि सार्वजनिक सुनवाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं वाले लोग शामिल थे। लेकिन कार्लसन का कहना है कि शहर को सही संतुलन मिल गया है। कैनेडियन सरकार ने शनिवार को घोषणा की है कि वो गाजा पट्टी और पड़ोसी क्षेत्रों में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए अतिरिक्त $50 मिलियन प्रदान करेगी। इंटरनेशनल डेवलपमेंट मिनिस्टर अहमद हुसैन ने एक बयान में जारी कर कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी पैसा हमास को ना जाए। वह आतंकवादी समूह जिसने 2 सप्ताह पहले इजराइल पर आतंकवादी हमले किए थे उन पर कोई भी पैसा नहीं जाए। हुसैन का कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन को भोजन, पानी, चिकित्सा सहायता, सुरक्षा सेवाएं और अन्य जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा। नई फंडिंग गाजा में मानवीय सहायता के लिए कनाडा द्वारा पिछले सप्ताह दी गई $10 मिलियन से अलग है। हुसैन ने यह घोषणा इजिप्ट में की है जहां वह फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर मेलानी जोली के साथ एक पीस समिट में भाग लेंगे। पहले एक जॉइंट स्टेटमेंट में मंत्रियों ने कहा कि वे हमला में कनाडा ने निंदा की है। साथ ही गाजा में बिगड़ती ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन पर कनाडा चिंताओं को भी उजागर करेंगे जो कि 2 मिलियन लोग का घर है। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्पोर्ट्स न्यूज़। रग्बी वर्ल्ड कप के अंतर्गत सेमीफाइनल्स समाप्त हो चुका है। रिजल्ट्स कुछ इस प्रकार से है। न्यूजीलैंड और अर्जेंटीना के बीच में जो खेल हुआ पहला सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड ने अर्जेंटीना को बड़े ही सरलता से 44 पॉइंट्स टू 6 से पराजित किया। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच में जो खेल हुआ उसमें साउथ अफ्रीका की जीत इंग्लैंड से 16 पॉइंट्स टू 15 से हुआ।
थर्ड प्लेस का जो खेल है इंग्लैंड और अर्जेंटीना का, वो अक्टूबर 27 को खेला जाएगा। और शनिवार को अक्टूबर 28 को फाइनल न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला जाएगा। NHL के अंतर्गत वैंकूवर कैनक्स की कुछ खेल इस प्रकार से हुआ है। पहले मैच में वैंकूवर कैनक्स ने एडमिंटन ऑयलर्स को 8-1 से पराजित किया है। दूसरे खेल में कैनक्स की जीत एडमिंटन ऑयलर्स से 4-3 से हुआ। तीसरे खेल में वैंकूवर कैनक्स का भिड़ंत फिलाडेल्फिया फ्लायर्स से हुआ, जिसमें वैंकूवर कैनक्स की हार 2-0 से हुआ। टेम्पा बे की जीत वैंकूवर कैनक्स से 4-3 से हुआ है। और कल जो खेल हुआ है, या शनिवार को जो खेल हुआ है कैनक्स और फ्लोरिडा पैंथर्स के बीच में, उसमें कैनक्स की जीत फ्लोरिडा पैंथर्स से 5-3 से हुआ है। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद जी। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप न्यूज़ को शेयर करने चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और आप हमारे स्टूडियो में भी कॉल्स कर सकते हैं। अब हमारे स्टूडियो में आए हैं हिज एक्सलेंसी फिलिपो ताराकीनी, एम्बेसडर ऑफ फिजी इन न्यूयॉर्क फॉर USA एंड कनाडा। अब देखिए उनसे हमारी इंटरव्यू। Hello and welcome to Fiji in Focus. Thank you all for tuning in, and I have a very, very special guest for all of you for today. And this gentleman is His Excellency Mr. Filipino Tarakini, Ambassador of USA, first visit to Canada and first time he came on our set for Fiji in Focus. So welcome, sir. Thank you very much, Camilla. I'm pleased to be here with you. Thank you for coming all the way, and I know you are here for Fiji Day, but thank you for taking your time to come to our studio and talk to our audience. Well, I really appreciate the opportunity to be able to connect with your audience, especially in my capacity as the representative of Fiji to the United Nations. And, So talk a little bit about yourself, your background, your designation. I was born in Fiji, in province of Naitasiri. Born in the village of Ndelela Sakau, raised there, went to primary school there, came to Marius Brothers High School, then joined the military. Spent 20 years in the military in Fiji, then I've spent the last 22 years in working in the United Nations. I retired at the end of December, took early retirement, and then I was asked to become the Fijian ambassador to the, rather permanent representative to the United Nations. And also acting ambassador to the United States, and to Canada, to Cuba, and also to Israel. So as a secretary, is it, for the United Nations, what is your role? I mean, being an ambassador, right now you are based in New York and Yes. you are ambassador. So what is your role as an ambassador? Yeah, the United Nations, Camilla, as you know, is the world body, and there's a number of different organs, and each country in the world is represented in New York. So we are, our rank is ambassadors, but then we are known as permanent representatives, because the Yes. United Nations is made up of a number of organs, as I said, the primary one being the General Assembly, which is in New York, and the United Nations Security Council, and the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, then you have the Human Rights Council, the World Health Organization in Geneva. So all these bodies require countries to send representatives. So we represent our head of state and the head of government. And so, like in New York with the General Assembly, the high point of the year is the United Nations General Assembly in September. So that's when the head of government comes. Governments who have heads of state, who have executive authority would come and speak in this multilateral system. So my job is really to represent Fiji, to show that Fiji is a good global citizen in the multilateral system, that we can step forward and do our part in whichever field. As you know, Fiji played a big hand in the establishment of the International Seabed Authority. So as far as oceans are concerned, we are very well known in that regard. In peacekeeping, 45 years, our soldiers have been
providing peacekeeping duties, not only in the Middle East, but also in other parts of the world. With climate change being the topical issue now, in the ocean, which is very important for us. So these are just examples of the areas where Fiji is represented. And I must say that as a small country, we do punch above our weight. People cannot believe that we are a country of around about 1 million people, but we seem to be everywhere, and Fijian citizens are doing very well, as you know. Great work, yeah. Here in Whenever Canada, they have spread their wings. Yes. Yes. Indeed. So I know that climate change is a big one for Fiji and for the whole world. And Fiji is well represented, and Fiji is very actively involved in the climate change. Because when you sit on the United Nations, you're representing your country, Fiji, Yes. right? Yes. So can you talk a little bit about some of the changes that has happened while you representing as the permanent secretary on climate change in Fiji? Yeah, I've been in the job now for about since April. Yes. And as I said, I'm the permanent representative, so I work with the line ministries in Fiji. Okay. So in the Prime Minister's office, we have a team of climate and ocean specialists. Okay. So the negotiation is an ongoing one. In November, we will have COP28, which is the climate change forum. So that will be the 28th year this has been going. So that will be held in UAE, and Fiji will be represented in that. As you know, COP23, Fiji was the lead on that. And so changes have been happening because, Camilla, in this kind of global resolutions, it take years to negotiate. Yes. And so the target, as far as the climate change is concerned, is that we do not allow the global warming to go beyond 1.5 Celsius. Yeah. So the big emitters are the ones we are expecting to give us a plan of how they can achieve their target of not going beyond 1.5 Celsius. And there's a number of big emitters, obviously I cannot say the names in public, that we are pushing, that they must come forward with their plan, because we are negligible emitters, but we suffer the consequences. Yeah. Small island developing states especially, and also every country suffers, especially those that have coastlines, even the United States, China, but for us, especially for our atoll states, these are existential threats. For example, we have Tokelau, we have Kiribati, we have Tuvalu, and Marshall Islands. These are atoll states. For them, if the global warming is not arrested, they will go underwater. Yes. So that's where we are right now. And we are really in a crisis mode to make sure that by 2030, Yeah. we achieve this target of keeping the global warming below 1.5 Celsius, which is it's a real big challenge. We have experienced this in British Columbia this year over the summer months. From March or April, since August, September, there were fires, and the temperatures went as far as 49 degrees, and half the British Columbia burned down during that time. And no rain, just very hot weather, and half the province was burning down. So we have to take this global warning. I mean, we've been using these words, but we haven't taken it as seriously as we should have, because this is happening right in front of our eyes right now. So we have to be very, very careful what we say and how we do it. The next thing I was going to ask you, as a permanent secretary and as an ambassador based in New York, what is your mission? How do you see the people you represent USA right now, and you are still waiting for your designation? How do you see your role representing Fiji in North America? Yeah, my role is to make sure that Fiji's interests, Fiji's national interests, foreign policy,
targets are achieved. And that requires negotiation, requires dialogue, requires being part of working groups and committees on several issues. And I had alluded earlier to some of the examples. And so, as a small country, we need to ensure that we partner with developed countries and also with developing countries. For example, we have the Pacific Island Forum. And then we have, within the Pacific Island Forum, we have the Melanesian Spearhead Group, and then you have the Small Island Developing States of the Pacific, known as the PSEADs. So these are all the different kind of alliances that are formed in order to ensure that you negotiate as blocks. Because if you negotiate on your own, it's much harder to gain. Yes. Thank you, Mr. Tarak Kinikini. Ji, you came all the way from New York to attend Fiji Day here in Delta. हमारे पास कुछ public announcements है, लीजिए देखिए. Please have your pen and paper ready to make the notes. Nations on the Isles of Fiji, as we stand united under one banner blue, and united across the freedom river, onward march together. God bless Fiji, for Fiji, ever Fiji, let the voices ring with pride. For Fiji, ever Fiji, burning with far and wide. To endure but be free. Canadian Empowered Women of Fiji Foundation are doing their second annual Christmas dinner and dance with Toy Drive of BC Children's Hospital. This is taking place on Saturday, December the 9th at 6:30 p.m. at the Taj Convention Centre in Surrey. Tickets are only $40 per person. Children under 10 are free. And bring some unwrapped toys for the sick children. For tickets and more information, please call 604-825-8261 or 604-831-0240. Sanja Vera Women's Association presents 19th Annual Breast Cancer Fundraisers on October the 27th at 6:30 at the Daliwell Banquet Hall in Surrey. For tickets and more information, please call Thirat Sarai at 604-760-7235 or Sarbjeet Chima at 604-724-3796. Touching Lives Foundation presents the 5th Annual Christmas Party Fundraiser on December the 8th at Empire Banquet Hall in Surrey. For tickets and more information, call Touching Lives Foundation, Josie Chowan at 778-892-7388 or Nina Vora at 604-603-4684. This year's proceeds will go to Sarah for Women in Translation Houses. Navratri Puja starts from October the 15th to October the 22nd at Gita Gyan Mandir from 7 p.m. at 11387 128th Street in Surrey. We will show you some highlights of the flag hosting ceremony in Ottawa by the Fijian Society in Brampton. Have a look. Now we will show you the interview with the Angle Music Productions team that came into our studio to talk about the New Year's Eve party. Have a look. We ran out of time, but we will bring more highlights into our next shows. हमारे पास इतनी समय था, अब हम आप सभी से विदाई लेने चाहते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस शो के देखने के लिए. हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो के एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप हमारे फिजियन फोकस से जुड़ते रहेंगे. इस शो के आप फिर से देख सकते हैं every Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग
YouTube चैनल पर भी Fijian Focus को देख सकते हैं. Please press the like button and do not forget to share. Fijian Focus brings 3 other shows. आपके लिए Asian Pulse TV on every Wednesdays at 1:30 p.m., Thursdays at 8:30 p.m., and Sundays at 5:30 p.m. Camilla Singh Talk Show on every Mondays at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. Bula Beats TV on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all of our shows. अब हमारी मुलाकात होगी next week on Tuesday at 10 p.m. only on Shaw. हम आप सभी की शुक्रिया अदा करते हैं for spending your valuable time with us. Please watch all of our shows and like and share on YouTube. I am your host, Joshi Reddy, Dhanyavad, and Vinaka. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005.